within that structure, you're not going to have a similar member, similar data type member. They are different data type members, right? Hello? Yes, sir. Yes. So, like for an example, again, I will take one example. You can say struct, how to declare the structure. This is your keyword, right? Struct, okay. Is my screen is visible? Yes, sir. Struct is a keyword, and then suppose I'll write struct student. So this is your data type, I'll say. Type of structure. What type of structure I'm declaring? I'm declaring student type, data type, or you could also say structure name. What is the name of the structure? Student. Name or type. Then I'm saying character, maybe name 20. So this is your, or whatever I'm going to declare right now, they all will be the members. Character, gender, maybe integer, age, right? बस इतना ही हम लेते हैं. So these inside whatever we have declared inside the student, they are your data members. Data members. Now what you can see, are they of similar type or dissimilar type? First one is a string, second is a character, third is an integer, right? Or if you want, you can add one more, long integer contact number. Long integer contact number. So what is the total size of this? And you have to declare, the declaration will get over only by with the help of a semicolon. So you just have a look, struct, structure name, members, followed by a semicolon. So the size of this structure is 20 byte for name, 1 byte for a character, 2 bytes for integer, and 4 bytes for the contact number. So again, here also it is going to take 27 bytes of memory. But right now, it's like this is a data type, right? And what type of data type it is? It is a secondary data type. Last time I had told you, right? Student. Hello. So in primary data type, suppose I'll write integer. How many bytes are memory is allocated? How many bytes of memory is allocated? No bytes will be allocated. When the bytes will be allocated, if I will declare the variable of that type, right? Because just saying integer, no bytes. Why you require 2 bytes for what? You tell me. But ये तो integer means whenever you declare a variable of integer, then only the 2 bytes will be allocated. आप केवल int बोलेंगे तो कुछ भी declaration, कोई भी memory allocate नहीं होगा. When the memory will be allocated, only if I'll declare the variable, very important. So if I'm declaring a comma b, now how many bytes will be allocated? How many bytes of memory will be declared? Or 4 bytes. So similarly, if I'll say just student, what is student? Student is a data type. How many bytes of memory is allocated? Like this integer was your type, which is your primary data type. Now, student is a secondary data type. How many bytes of memory is allocated? Why secondary? Because we can change the name of my data type. In primary, तो जो int है तो int ही बोलना है, char है तो character ही बोलना है, right? Long int. You cannot rename them. In secondary, and their size is also fixed. In the primary data type, the type you cannot change, and the memory size also you cannot change. But in secondary data type, which is user defined data type, we used to call it as user defined. हम बताएंगे कि बाबा इसका टाइप क्या होगा, स्टूडेंट होगा कि एम्प्लॉय होगा कि डॉक्टर होगा कि नर्स होगा कि प्रोडक्ट होगा, बुक होगा, क्या होगा. And then for that data type, how many bytes that data type require, that also it depends on how many members you have added and what type of member you have added, right? Student, try to understand the difference between the primary data type, declaration of primary variable, and declaration of secondary variable. What is the difference? In primary, what happens?
as and you keep on adding the members, the size will increase. If you're going to remove the member from inside, then the size will decrease, right? And in primary, the name of data type also you cannot change. You cannot rename. Float को आप दूसरा कुछ नाम नहीं बोलोगे. Double को double ही रहेगा. You cannot rename them, right? बट स्टूडेंट को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. स्टूडेंट को केवल मुझे इसका शॉर्टकट करना है तो बोले स्टूडेंट को केवल एस टी बोल सकते हैं, राइट? एस टी यू बोल सकते हैं, एस टी डी बोल सकते हैं, वट एवर यू कैन कॉल इट एज. देन अकॉर्डिंगली इफ आई जस्ट सेड एस टी, then you just have to change here st is a variable. St is a data type here, like, because I've declared st, so st is my data type, right? Is that clear, students? This is because this is a secondary data type, user defined data type. हमारी मर्जी हमको उसको क्या नाम देना है, right? So then how many bytes will be allocated for st? No bytes will be allocated. When I declare the variable for st, that is s1, so then okay, s1 is a variable for this, so s1 has got how many members? s1 के अंदर में s1 का टाइप क्या है? st. और st के अंदर कितने मेंबर हैं? What is the type of st? Sorry, what is the type of s1? S1 का टाइप क्या है? S1 किसका वेरिएबल है? ST का. और ST के अंदर कितने मेंबर हैं? ना ST के अंदर मेंबर कितने हैं? डेटा मेंबर कितने हैं? 4. 4. तो S1 को कितना बाइट्स मेमोरी चाहिए? S1 को कितना मेमोरी बाइट्स चाहिए? 20. 27. जस्ट हैव अ लुक. दिया है तुम्हारे सामने, आंसर भी दिया हुआ है. Like suppose if you are saying integer, if I am saying integer, right, and you said a, just a, then this a will require how many bytes of memory? Because what is a here? What is a here? A is what? Variable, right? And integer is what? Type. Integer क्या है उसका? Type. S1 is a variable, right? And st क्या है उसका? st क्या है? Type. तो st जो टाइप है इसके अंदर मेंबर कितने हैं? बिकॉज st को साइज क्या है? The size of st depends on how many members you have declared inside st. The size of st depends on primary data type का. You cannot change the size, but st का secondary storage का we can change the size. Right now I'm having 4 members. You can have 5 members. Accordingly, the size of st will increase, right? Will it increase or decrease? Student, increase. So what is the size of st right now? Size of st is 27. तो अगर मैं S1 डिक्लेयर करूंगा, अगर मेरा S1 डिक्लेयर होगा S1, तो उसको कितना बाइट मेमोरी चाहिए स्टूडेंट्स? S1 को कितना बाइट मेमोरी चाहिए? 27 बाइट्स. कितना? 27. अब वो 27 कैसे चाहिए? देखो, ये हमारा मेमोरी है. ST बोल रहा है ये आपका मेमोरी है. इसमें से ये 20 बाइट्स आपका नेम के लिए हो गया. ये 1 बाइट जो है आपका, दिस इज व्हाट? दिस इज योर नेम मेंबर. दिस इज योर जेंडर वाला है, right? This name require 20 bytes, gender require 1 byte, and you are having other member as well. That is age. This require 2 bytes, and the remaining contact number you said this require 4 bytes. Okay. So total, if you are going to sum up this is, and what is the name of this variable? ये memory के अंदर ये चारों रहेंगे. Name है उसका S1, और वो S1 के अंदर कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं, right? Hello. And how do you refer them now? अगर आपको नेम को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? S1 डॉट नेम. जेंडर को बुलाना है तो S1 डॉट जेंडर, राइट? क्योंकि केवल S1 चिल्लाने वाले तो कुछ नहीं होने वाला है. कोई नहीं आने वाला है तुमसे बात करने के लिए. You have to say clearly S1 has got 4 members. You are talking about which member? So you need to refer them with the help of dot. You need to refer them with the help of dot. Students, be careful. So S1 dot name, S1 dot gender, S1 dot age, and S1 dot contact number. S1 dot age and S1 dot contact number. और अगर इनको मुझे यूजर से रीड करना है तो आप कैसे रीड करोगे इनको? इसमें अगर वैल्यू लाना है, जेंडर क्या बोला? बोले मेल फीमेल जो भी है, तो आपको यहाँ पे एम्परसेंड लगाने पड़ेंगे.
और स्ट्रिंग में एम्परसेंड नहीं होता है, ये मैंने बहुत बार बोल दिया है आपको, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू. Please do understand. If you are having any doubts, I will explain you. Again, try to differentiate. What is the difference between primary data type and secondary data type? Bolo. जल्दी से बोलो. Anyone? अरे बाबा, कैप 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 दूसरे को बोलने तो नहीं, तो इन लोग को लगता है कैप है ना बोलने के लिए. हाँ. Students, please tell me. So Anyone? primary data type is predefined, which means the type and size is already given. And sorry, we can't change that. And secondary data type is user defined, which means we can give the name and size of uh, the data type. Right. Primary में, as I said, the name of type and the size you cannot change. Right? Once I say integer, means int only. You have to write int. You cannot write integer or in or whatever it is. So the name of that type also you cannot change, as well as the size you cannot change. Predefined. Whereas secondary may, the name of the the name of the type you can change, and the size depends on how many members you have added in that secondary data type, students, right? Like here we have added 4, 5, 6, it depends as per your requirement. Okay? Is that clear, students? Like suppose if I'm going to have employee structure, so I'll have struct employee, and you can have the name, character name, and maybe 20 again. Here also character gender. Let us have the employee ka age. Then let us have the employee ka salary, double salary. Okay. Let us have long integer contact number. Okay. Let us have character E code. What is the employee code who is working in some company, organization, wherever it is? Now, could you tell me what is the size of this data type EMP? Iska kitna size hai? Anyone? What is the size of EMP? Is my declaration is over? No, declaration is not yet over. Declaration will be terminated only with the help of semicolon. Because say just if you are saying integer A, the compiler will shout at you. It will say why, where is semicolon? So there has to be a semicolon after declaration. So similarly, once I'm ending with my declaration of EMP, then you have to have a semicolon, right? So what is the total size for this EMP data type? Students, kitna size hai iska? Aishwarya Thomas? Aishwarya, are you there? Hello? Yes, sir, I'm here. Bolo beta. What is the Sir, size can of you this? show the screen? Yes, yes. What is the size for this EMP? 45. Let us have a count. Let us have a count. This will require 10 bytes. This will require 20 bytes. This will require 1 byte. This will require 2 bytes. This will require 8 byte. This will require 4 byte. Let us add them. So this 30 के बाद में, yes, it is 45. 30 के बाद में ये 8 plus 2, 40 plus 44 plus 1. This requires 45 bytes of memory. So as I told you, secondary में size depends on how many bytes that data type required depends on how many members you have declared, how many members you have added inside that data type. But in the primary data type, size depends on the type, right? Here the size depends on the number of members inside your. So here the size is variable. Size is not fixed, but their size is fixed. Here name is not static. Name is a dynamic. You can give any name. That is one. Second thing, how to declare the variable is for the structure. There are two ways. One, again, I'll repeat. One, you can declare within the structure. I'm saying just E1 semicolon. So now E1 will be requiring 45 bytes of memory. But E1 मतलब केवल एक एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर होगा, एक ही एम्प्लॉय का. जैसे कि अगर हमने बोला ये हमारा एक व्हाट यू कैन से रादर एक एम्प्लॉय है,
जिसको 10 बाइट्स ई कोड के लिए चाहिए, 20 ई कोड एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का नेम के लिए चाहिए, एम्प्लॉय का जेंडर के लिए चाहिए, एंड एम्प्लॉय का एज के लिए चाहिए, और कौन है एम्प्लॉय का सैलरी है, एंड एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर है. सो दिस इज 10, 20, 1, 2, 8 एंड 4. एंड हाउ विल रिफर दिस, इन लोग को आप एक्सेस कैसे करोगे? यू आर हैविंग अ वेरिएबल कॉल्ड E1. So this E1 is one employee ka detail. If I want to store two employee ka detail, what is to be done, Aishwarya? Aishwarya? Sir, I don't. No, we just have to declare one more variable. जैसे आपको दो integer like integer A will store how many integer value? One or two? One. If I want to store two integer value, what is to be done? Also call integer two. If I want to store three integer value, what is to be done? Call one more integer. If I want to store 100 integer value, what is to be done? Call an array. Array, very good. So I say A of 100. So similarly, on the similar line, if I want to store one employee, I'll say E1, two employee, I'll say E2, three employee, I'll say E3, and so on. But somebody is saying 100 employee. So then here itself, instead of E1, E2, E3, I'll say E of 100. Right? I'll say E of 100. Right? So E0, E of 0, E of 0, that E of 0 here will be your first employee, E of 1. ऐसे ही ब्लॉक आप बनाओगे, E of 1 के लिए will be your second employee, E of 2 will be your third employee, and so on. I hope you are getting my point, right? Student. Yes, sir. And each employee will require how many bytes of memory? 45 bytes of memory, right? And so for 100 employees, how many bytes of memory do we require? If I'm storing the details of 100 employee, how many bytes of memory we require? 4000 byte, 4500 bytes of memory we require to store the details of 100 employees as per this structure. Later on, अगर आप ये structure में change करोगे, then the size will also change. So don't tell sir, आपने तो 4500 बोला था, now it is asking for 5500. No, the size depends on, again and again I'm telling you, depends on your data members. What type of data members you have declared and how many data members you have declared. Size depends on the data members. Whereas integer में you said A100, here the size is fixed. It will just require 200 bytes. बस उसके ऊपर डिपेंड है. इसका 4500 bytes किसके ऊपर डिपेंड था? मेंबर्स. यहाँ से हमने एक मेंबर कैंसिल कर दिया. 8 members, एक member salary हटा दिया, 8 bytes हटा दिया. Now it is going to take 37 bytes, right? 37 into 100, that is 3700, right? Getting my point, student? Is that clear? Hello? Yes, sir. I hope it is very much clear. If you are having any doubt, please ask me. What is structure? Structure is a collection of dissimilar data type. Dissimilar क्यों? देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई string है तो कोई character है तो कोई integer है तो कोई double है तो कोई long integer है. You can add some more, right? Is that clear, students? इतना समझ रहे हैं? इसलिए हम इसको dissimilar बोलते हैं. और array क्या होता है, students? Array क्या होता है? Collection of, चलो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा हम लिखते हैं and we'll tell this. What is an array? Array is collection of similar data types. Similar data types. Data type members. Similar data type members होंगे. For an example, अगर आपने बोला है कि int A100, so that means in this A you can store only 100 integer values. You cannot store any other data type inside A0 or A1. Only it will take integer value. It cannot take float, character, string. Nothing is possible, right? Student, if I have taken character B100, so that means you can store 100 characters in this. You cannot store integer over there. You cannot store long integer or any other thing except characters, right?
Is that clear, students? Hello? Hello? And Yes. what about structure? What you said about the collection of dissimilar dissimilar data type, not similar dissimilar data type. Okay, collection of dissimilar data type. Example आपके सामने ऊपर वाला example, you can write it down here. Struct emp and whatever we have declared, ये हो गया. So ये हमारा dissimilar है. Structure बोलते हो dissimilar है, array बोलते हो similar है. Then what is coming up? Array of structure. Array of structure. That means अगर आपने वहां पे आपका ये e था वेरिएबल यहाँ पे e. So if I say, हाँ बोलो बोलो. I'm coming back to your question, whatever you're answering, वही पॉइंट में मैं आ रहा हूँ. हमने एरे को क्या बोला हुआ है? सिमिलर बोला हुआ है. एरे को क्या बोलते हैं हम लोग? सिमिलर. स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डिसिमिलर. और हम बाद में बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर. बाद में हमने बोला एरे ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो एक, हाँ, एरे ऑफ स्ट्रक्चर. व्हाट इज द एरे ऑफ स्ट्रक्चर? मतलब E0 इज माय फर्स्ट स्ट्रक्चर, E1 इज माय सेकंड स्ट्रक्चर, E2 इज योर थर्ड स्ट्रक्चर, E2 is your third structure, E3 is your fourth structure, and so on. E99 is my last structure, right? And as per whatever structure we have defined, as per whatever structures you have defined, you know, जो आपने ऊपर डिफाइन किया था, उसको सबको as per our definition it was taking 45 bytes of memory, right? सबको कितना बाइट सबको कितना बाइट्स मेमोरी फिक्स था? यस. तो यहाँ पे जो सिमिलर था, सी, don't get confused. Structure is, I mean, the members of the structures are dissimilar, but every structure is similar. Every structure is similar. What is the structure is similar? कि बाबा हर एक में एम्प्लॉय कोड था, एम्प्लॉय नेम था, एम्प्लॉय जेंडर था, एम्प्लॉय एज था, एम्प्लॉय सैलरी था और एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर था. दूसरे का भी वही था, थर्ड का सिमिलर, फोर्थ का सिमिलर, फिफ्थ का सिमिलर. And every structure was occupying same amount of memory, 45 bytes, 45 bytes, 45 bytes, right? Like array में क्या होता है? When I say array, A0 will take how many bytes of memory? 2. A2, A1 will take 2. A2 will take 2. 2 bytes memory for every element, right? Yes or no, students? Hello? Because we said, sir, they are integer, so similar data type. So here also they are similar structure. Once I say employee, sabhi employee, E0 is employee, E1 is employee, E2 is employee. That means once I'm saying I'm storing employee detail, you cannot store a book detail, a building detail, a product detail, right? Any car detail, bike detail, because what are the members? Sir, E code, E name for all, E code, E name, age, gender, salary, and so many things. सो दोज स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर. जैसे कि मान लो आप क्लास का स्टोर करो, स्टूडेंट से आपका स्ट्रक्ट है और स्टूडेंट है, और आपको अपने पूरी क्लास का डिटेल स्टोर करना है. सो यू आर गोइंग टू हैव द रोल नंबर, कोड, एज, जेंडर एंड सो ऑन. ये सिमिलर है. और इसमें अगर मुझे 100 बच्चों का डिटेल स्टोर करना है, तो एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. इज द इंफॉर्मेशन इज चेंजिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट या सिमिलर है? वैल्यूज आर चेंजिंग. वैल्यूज आर चेंजिंग, बट मेमोरी के लिए हर एक स्टूडेंट का साइज फिक्स है, राइट? इज द साइज इज द साइज इज गोइंग टू डिफर. साइज तो फिक्स है ना सबका. आप उसके अंदर चेंज क्या कर रहे हो? वैल्यूज चेंज कर रहे हो, राइट? किसी एम्प्लॉय का कोड कुछ और होगा, किसी नेम का कुछ और होगा, एज कुछ और होगा, जेंडर कुछ और होगा, सैलरी कुछ और होगा, और कॉन्टैक्ट नंबर विल डिफर. बट उनका जो पैटर्न है सबका, वो तो सिमिलर है ना सबका, राइट? आई होप यू पीपल आर गेटिंग what I'm trying to tell you. Structure is a dissimilar data type. Structure is a dissimilar data type, but array of structure is what? What is array of structure? Once I say array, similar type of structure, similar type of structure, right? Alex, because every structure is going to take
same amount of memory. S अगर E0 बोलोगे तो 45 बाइट्स, E1 बोलोगे तो भी 45 बाइट्स, E3 बोलेंगे तो भी सबका उतना ही बाइट मेमोरी चाहिए, राइट? Is that clear, students? See, one more thing I would like to add here. If you'll understand structure, then you will be able to understand union very well. It won't require much time. So just try to clear your structure. So how to declare the structure? Again, I'll repeat. So you have to say struct emp. आपके पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पे मेंबर्स हैं, आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, और you can declare separately by struct emp e. Now which method you want, right? तो यहां से अगर आपने ई डिक्लेयर कर दिया है, बाद में प्रोग्राम में आपको एक और वेरिएबल चाहिए बाद में, तो आप यहां से आपको यहां आना पड़ेगा, वापस यहां आके E1 करना है और E2 करना है। प्रोग्राम में ऊपर आना है, आप कहीं नीचे घूम रहे हो, E1 E1 किया, E2 किया, जितना चाहिए आपको यहां से ही बढ़ाना है। और यहां से अगर हमने किया है struct E1 E2, struct किसका है टाइप, सॉरी, struct क्या है, EMP, struct emp e1 e2, you decide now which is better for you, right? E1 e2 e3, getting my point? Hello. Now let us, if anybody is having any doubt, please tell me. Anyone having any doubts about this structure? What is structure? Collection of dissimilar data type. Where to use structure? Why we are learning structure? Last time we had seen many examples. Where to use this structure? Application of structure, मतलब जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कभी हमें हमने उस दिन बात किया था, चलो टूर्स एंड ट्रैवल्स में यूज करना है तो हमें बस का भी डिटेल यूज करना है तो स्ट्रक्चर चाहिए, ड्राइवर चाहिए तो स्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ चाहिए तो स्ट्रक्चर चाहिए, पैसेंजर है तो स्ट्रक्चर चाहिए, राइट? यस और नो? फेयर डिटेल्स अगर स्टोर करना है कि बाबा यहाँ से यहाँ तक का, तो फेयर का चार्ट भी बनाना है तो भी स्ट्रक्चर चाहिए, राइट? व्हाट डू यू रिक्वायर? यस, वी रिक्वायर स्ट्रक्चर एवरीवेयर। हॉस्पिटल में आएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, पेशेंट का डिटेल चाहिए, डॉक्टर का डिटेल चाहिए, स्टाफ का डिटेल चाहिए, वार्ड का डिटेल चाहिए, राइट? ट्रीटमेंट का डिटेल चाहिए, एवरीवेयर व्हाट वी रिक्वायर इज अ स्ट्रक्चर। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट स्ट्रक्चर। So we are very much clear with structure. Again, I'll ask somebody and then I'll go further. I'll ask Alok, Mr. Kushwaha Alok, what is structure? Kushwaha Alok, what is Sir, structure? yes, yes. It's a collection of dissimilar data types. मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? So it's in this it values changes in वैल्यू चेंज, structure the value फिर से changes, but अंडरस्टैंड करो रियल लाइफ में। जैसे आप कोई बुक का डिटेल स्टोर कर रहे हो तो बुक का क्या होगा? टेक्स्ट बुक है, उसका एक ऑथर होगा, उसका एक टाइटल होगा, उसका पेज नंबर होगा, उसका प्राइस होगा, उसका प्रिंट होगा, उसका एडिशन होगा, yes, राइट? उसका yes, पब्लिकेशन होगा। तो अगर पूरा बुक का डिटेल स्टोर करना है, सो व्हाट डू आई रिक्वायर? आई रिक्वायर struct स्ट्रक्चर। Can you store in an array? No. We can no have sir. array of structure if I'm storing multiple Yes, book details, right? If you are yes, storing multiple book details, then you can have array of structure, right? mm, yes. Yes. चलो एक हम छोटा सा बात करते हैं. Let me see who can give me the memory requirement for this. I'm having one structure called, look at this, struct student, and मेरे पास एक कैरेक्टर स्टूडेंट आईडी है, एस आई डी, मे बी 10 कैरेक्टर्स, रोल नंबर जैसे तुम्हारा कैसे स्टार्ट होता है, एंड एस नेम है, स्टूडेंट का नेम है, मे बी 20 कैरेक्टर्स, एंड देन कैरेक्टर एस जी है, मतलब स्टूडेंट का जेंडर है, कैरेक्टर एस एज है, स्टूडेंट का एज है चाहिए तो, देन आई एम गोइंग विद द इंटीजर। मेरे पास तुम्हारी ही क्लास के मुझे सभी स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है। अब तुम लोग थोड़ा बताओ, लेट मी सी हु हैज गॉट द ब्रेन। मुझे तुम्हारे सभी बच्चों का मार्क्स स्टोर करना है, तो क्या करना चाहिए? हाउ डू आई डिक्लेयर द वेरिएबल? स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास
क्लास में कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 130. 130. तो मुझे 130 एंड ईच स्टूडेंट हैज गॉट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 5 सब्जेक्ट्स. तो अगर मुझे मतलब ये डिटेल स्टोर करना है तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा? कैन somebody थ्रो अ लाइट ऑन दिस? बोलो सर. चलो, तो अगर मैं एरे जैसे मैंने मार्क्स बताया, तो मार्क्स मतलब 130 स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट्स करना है तो आपको 2 डायमेंशनल एरे ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट? यस और नो? जैसे मान लो पहला स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट, सेकंड स्टूडेंट सिमिलरली. So like this will continue up to 130, and this side this will go up to 5, right? Yes or no? So similar detail I want for 130 students. मतलब उनका रोल नंबर क्या, नेम क्या, जेंडर क्या, और उनके मार्क्स स्टोर करना है. तो हु कैन आंसर दिस? यहाँ पे मैं क्या लिखूं? ये मेरा क्वेश्चन मार्क है. अब बोलो जल्दी स्टूडेंट्स, कितना टाइम ले रहे हो तुम लोग? हेलो. और साथ में मुझे सभी बच्चों का एंड में मार्क्स ये करने के बाद में टोटल भी चाहिए. एक नेक्स्ट कॉलम आई विल हैव टोटल हियर. ये टोटल लेने वाला हूँ. तो टोटल 100 बच्चों का 130. फॉरगेट अबाउट 130, टॉक अबाउट 100 इन जनरल, तो हमको इजी रहेगा बात करने में. 100 स्टूडेंट्स का टोटल चाहिए. तो कैसे डिक्लेयर करूं, क्या करूं? बोलो. एरे ऑफ एम का एरे 1D रखना है, 2D रखना है? और टोटल 3D हो जाएगा, एरे 3D हो जाएगा. नो सर. हाँ, कौन बात कर रहा है भाई? सब बच्चे कहाँ गायब हैं? यस थॉमस, ऐसे भी है. So array sorry sir, array 1D रख के नीचे can't we declare another variable for another student? यस, एरे आप बोल रहे हैं 1D रखो सर आप. मैंने एम मतलब कितना कर दिया? कितना कितना? 5 फाइव. subjects. 5, वेरी गुड. 5, वेरी गुड. तो ये 5 सब्जेक्ट्स मतलब एक स्टूडेंट, हम टॉकिंग अबाउट सिंगल स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा सिंगल स्टूडेंट है. तो वही स्टूडेंट का मेरा 5 सब्जेक्ट का मार्क्स भी हो गया. एंड देन एज यू सेड सर, एक एस टोटल रखो. वो स्टूडेंट्स का एक टोटल मार्क्स रखेंगे हम लोग, राइट? Yes sir, and then we can declare how many students we want that much way. Yes, how many students we want? I said 130 or whatever it is. तो ये मेरा एरे हो गया, राइट? देखो कैसे डिक्लेयर किया. अगर हम नॉर्मल में जाते थे प्राइमरी डेटा टाइप में, तो ये आपका 2D में चलाना पड़ता था. आई एम गोइंग विथ अ स्ट्रक्चर. सो मैं S0 क्या हो जाएगा? देखो, अगर मुझे मान लो ये 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स रीड करना है, चलो मुझे या 100 स्टूडेंट्स का ये जो भी 130 का रीड करना है, तो आई विल हैव I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 130, I प्लस प्लस. और फिर मैंने बोला एंटर आईडी, नेम, जेंडर एंड सो ऑन. तो मुझे रीडिंग कैसे करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आई रियली डू नॉट नो. मतलब ये 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स लेना है तो कैसे करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? यहाँ तो अच्छे अच्छे प्रोग्रामर बैठे हुए हैं बाबा. हाँ, मुझे 100 बच्चों का 130 स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए. हाउ डू यू गेट द मार्क्स? हेलो. फॉरगेट अबाउट अदर डिटेल्स तो वेरी सिंपल है. आई जस्ट वांट 5 सब्जेक्ट का मार्क्स. व्हाट शुड बी डन? हाउ मेनी लूप्स डू वी रिक्वायर? 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप? कितना लूप चाहिए? ऐश्वर्या, कैन यू आंसर दिस? So 2 loops. देयर शुड बी इंटरनल कॉम्पिटिशंस. मैं सर को बोलती हूँ आंसर क्या है, भले ही रॉन्ग होगा. सिक्का, व्हाट इज योर आंसर? हाउ मेनी लूप्स डू वी रिक्वायर टू गेट दिस marks of all 130 students? So 2. 1 or 2? 2. So forget about other details. Just now, students, I'm talking about the marks.
बाकी कैसे लेना है मैं बाद में बता दूंगा. आई एम गोइंग अहेड विद द टू लूप्स. j is equal to 0, j is less than 5 and j plus plus, and then I am saying give me the marks of I may say here printf में. बाकी डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ. एंटर व्हाट, यहाँ मैं बोल रहा हूँ. नहीं, यहाँ मैं बोलूंगा printf एंटर marks of student परसेंट डी इन सब्जेक्ट. देखो कैसा चलेगा ये देखना कैसे. बाकी मैं डिटेल बाद में बता दूंगा कैसे लेना है. मेन तो मार्क्स है. एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट परसेंट डी इन सब्जेक्ट परसेंट डी. और ये कैसा चलेगा अभी. दिस हाउ दिस विल रन. ये है कॉमा आई प्लस वन जे प्लस वन. कुड यू टेल मी व्हाट इज आई राइट नाउ एंड व्हाट इज जे. आई क्या है और जे क्या है अभी. आई इज जीरो, जे इज जीरो, राइट. आई इज जीरो, जे इज जीरो. तो ये यहाँ पे आई यहाँ पे कितना हो जाएगा. वन हो जाएगा बिकॉज आई इज जीरो, सो जीरो प्लस वन इज वन, एंड जे इज जीरो, सो जीरो प्लस वन इज अगेन वन. तो प्रिंटिंग क्या देगा यहाँ पे. ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. आई को. सेकेंड परसेंट डी किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है. जे को. सो इट विल से एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन इन सब्जेक्ट वन, राइट. हेलो. Yes, sir. उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में कौन चेंज होगा. आई चेंज होगा कि जे चेंज होगा. So then j will become 1 and wo 1 plus 1 it will say enter marks of student 1 in subject 2, right. फिर कौन सा चेंज होगा. आई की जे. अरे J, J sir, J J, 5 sir, तक चलेगा. जे 5 बार चेंज करेगा. तो ये क्या बोलता रहेगा बार बार पता है. एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इन सब्जेक्ट 1 इन सब्जेक्ट 2 इन सब्जेक्ट 3 इन सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5. जब पांचों सब्जेक्ट का रीडिंग खत्म हो जाएगा देन आई विल चेंज. आई विल बिकम 1 and j will again become 0. So then it will say enter marks of student 2 in subject 1, right. देखो ये तीन लाइन हमको कितना पूरा 130 स्टूडेंट्स का मार्क्स रीड कर रहा है. और मैं रीड कैसे करूंगा. आई विल से scanf परसेंट डी. थोड़ा तुमको नया लगेगा. एम्परसैंड एस आई डॉट एम जे. सर ये तो बहुत ही थोड़ा डेंजरस है समझने के लिए मुझे. क्यों एमजे है यहाँ पे. क्योंकि आपका एक एरे था, सॉरी स्ट्रक्चर था, वहां पे बाकी सब छोड़ के यहाँ पे कुछ मार्क्स के बारे में बात हुआ था. ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स थे यहाँ पे. एक ये M0 था, M1 था, M2 था, और ये तुम्हारा S0 है, राइट. समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं. ये तुम्हारा S1 है, वहां पे भी एक 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है ऐसा. ये तुम्हारा S2 है, S2, यस. तो यहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट का मार्क्स है ऐसा, like this. So when I say I is 0, so कैसे रीड कर रहा है. S0. देखो एक ये तुम्हारा S0 ये हो गया स्ट्रक्चर. M0 मतलब इसका. S0 का M1 ये M1 हो गया सेकेंड मार्क्स. S0 का M2 थर्ड मार्क्स. S0 का M3 नेक्स्ट मार्क्स. S0 का M4 नेक्स्ट मार्क्स. जब ये पांचों सब्जेक्ट हो गया तो फिर I becomes 1. नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टूडेंट. and J has become again 0. S1 का M0, S1 का M1, S1 का M2, S1 का M3, S1 का M4, second student. Then I will become 2 and again J will become 0, right student. Hello. Yes, sir. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो आई पहले जीरो रहेगा. कितनी देर जीरो रहेगा. जब आई जीरो रहेगा दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टूडेंट एंड जे विल टेक वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4. ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए. जीरो का M0 S0 S0 डॉट M0 S0 डॉट M1 मतलब ये वाला एरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है. S0 डॉट M0 S0 डॉट M1 S0 डॉट M2 S0 डॉट M2 M3 M4 and so on. Once that will get over, then it will switch to the next structure S1. S1 का क्या. S1 का M0 M1 M2 M3 M4 वो खत्म हो जाएगा. फिर वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर थर्ड स्ट्रक्चर में जाएगा, राइट स्टूडेंट. सो S0 yes, I is talking about every structure and within every structure you have got 5 subjects, right. I hope you people are getting my point student. समझ रहा है यहाँ पे. Yes, sir. और ये समझ रहा है तो एक वहां पे जब मैंने बोला कि मुझे टोटल भी चाहिए तो
as and when I was getting the marks, I could have the total for my first student. S0 का total क्या है sir? Total of the first student, as Aishwarya pointed out, total variable हम लोग बाहर ले लेते हैं sir. तो S0 का total will be what is S0, जो भी पुराना मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स जब भी आया था, SI total plus SI which is I only 0 है, SI MJ. तो जैसे जैसे आप मार्क्स देते जाओगे, S0 का M0, S0 का M1, S0 का, दे ऑल विल बी एडेड एट S0 टोटल, मतलब फर्स्ट S0 के टोटल में पांचों सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, राइट? सिमिलरली S1 के टोटल में नेक्स्ट 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, S2 के टोटल में नेक्स्ट 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, S3 के टोटल में नेक्स्ट 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, राइट? स्टूडेंट समझ रहे हैं कुछ? सर जो ये हम कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. सपोज यू आर हैविंग अ कंपनी है तुम्हारे पास में, वहां पे बिजनेस होता है, सेल्समैन होते हैं, राइट? सेल्समैन यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे उनके मंथ रहते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन. उनका बिजनेस होता है, राइट? तो कंपनी देखता है कि बाबा सेल्समैन वन ने कितना बिजनेस किया है, तो यहाँ पे क्या चाहिए उनको? यही कॉन्सेप्ट चाहिए, स्ट्रक्चर, राइट? जैसे आप अपना स्टूडेंट का टोटल ऐड कर रहे हो, वो अपना सेल्समैन अपना टोटल ऐड कर रहा है. क्यों ऐड कर रहा है भाई? वो देखेगा बाबा मेरे इस बिजनेस पे मुझे कमीशन मिलेगा, राइट? तो ऐसे ही सेल्समैन 2 भी अपना ऐड करेगा, सेल्समैन 3 भी अपना ऐड करेगा. सेल्समैन ए भी देखेगा कि मेरा कौन सा मंथ में मैक्सिमम बिजनेस मैंने किया है. कैसे मालूम पड़ेगा मैक्सिमम? नहीं नहीं, टोटल से कैसे? सेल्समैन इज चेकिंग, ये मेरा एक सेल्समैन है, उसका 12 मंथ्स का बिजनेस है इधर. सो इन विच मंथ आई परफॉर्म्ड वेल, like as a student you may be checking in which subject I have got the highest marks. How will you find out? So that means indirectly I'm asking you what is the maximum of an array, right? And if I'm asking you in which subject you have got the lower marks, poor marks, so indirectly what I'm asking you, minimum of an array, right? So every student may be asking what is the maximum. In my case, every salesman is looking here, what is the maximum in my case, in which month I performed well. So similarly, ये देखो यहाँ पे एक maximum minimum हो रहा है, maximum minimum total, ये एवरेज भी चेक कर लेगा अपना सेल्समैन कि बाबा मेरा टोटल सेल कितना है, मेरा मैक्सिमम सेल कितना है, मेरा मिनिमम सेल कितना है, मेरा एवरेज सेल कितना है. और कंपनी, व्हाट हुएवर इज द कंपनी देख रहा है कि मेरा जनवरी में सभी का मिला के कितना सेल हुआ है, सभी का मिला के सेल कितना हुआ है, ये कंपनी चेक करेगा. और कंपनी चेक करेगा कि कौन से सेल्समैन ने मुझे बेटर परफॉर्म करके दिया है, इसका मैक्सिमम ये आएगा. लुक एट दिस, रो में मैक्सिमम निकालोगे तो वो किसका मैक्सिमम रहेगा? पर्टिकुलर सेल्समैन का रहेगा, राइट? और कॉलम का मैक्सिमम क्या बताएगा? वो किसको बताएगा? कंपनी के लिए बात करेगा कि सेल्समैन 1 ने अच्छा किया था कि सेल्समैन 5 ने. जिससे यहाँ पे फॉरगेट अबाउट द सेल्समैन, ये तुम्हारे रोल नंबर हैं, राइट? और ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, लाइक डीएम एंड देन आईपी, देन डीई, देन डब्ल्यूपी. ये सभी बच्चों ने अपने अपने मार्क्स डाले. तो ये जो डीएम या आईपी, ये टीचर बेचारा चेक कर रहा है कि आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, लेट मी चेक हु हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स. So if your teacher is checking highest marks, I have to look into the column. And if the student is checking highest marks, then the student has to look into the row. Students, be careful. मैं क्या बात कर रहा हूं तुम लोगों से. स्टूडेंट चेक करेगा अपना हाईएस्ट, तो उसको रो देखना है. टीचर को चेक करना है कि इन माई क्लास हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स और द लोवेस्ट मार्क्स. आई विल बी लुकिंग इनटू व्हाट, रो और कॉलम? Column. Be careful. So where these kind of applications are applicable, whatever I'm doing right now, I just brought one idea about the students का marks से था. मैंने आपको अभी सेल्समैन और कंपनी से भी बात किया. मे बी आई कैन हैव वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग, राइट? जैसे आप पूरा एक मंथ का वेदर ले लो, पूरा एक मंथ का वेदर ले लो, पूरा एक मंथ का वेदर ले लो,
और आपको बताना है कि कौन से दिन जरा टेम्परेचर हाईएस्ट था या लोवेस्ट था, राइट? इट मे बी अ रेनफॉल, राइट स्टूडेंट? बोलो बोलो। चलेगा, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। सब लोग मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, राइट ऐश्वर्या थॉमस? ऐश्वर्या, Yes, sir. सब लोग हमको डिस्टर्ब करते हैं। डज एवरी टीचर टीचेस यू प्रैक्टिकली? हाँ ऐश्वर्या? No, sir. In certain Prac- subjects they do, but not in others. No, I mean whatever concept is being taught, where it is there in the real life, ये तो connect करना चाहिए ना, because tomorrow when I'm going to work in the industry, I should immediately get a click कि हाँ, okay, at this particular place I have to use structure, or I have to use array of structure, or I have to use this, right? Yes, sir. Yes. Immediately आना चाहिए, otherwise it's of no use. So every time I'm trying to connect my concept with the real life, where it is there in the real life, where we can use this, where we are using this. नहीं तो कोई ऐसे जनरल बात करेगा, राइट दिस प्रोग्राम, सम client may talk to you in the future कि बाबा मेरे लिए सॉफ्टवेयर बनाने का है, and since no teacher has interact, given you the concept, practical concept, so you will not be able to link it with your knowledge with the practical life. But if during my learning itself, if somebody has told us like this, that structure देखो यहाँ पे है करके, we can use it like this, so immediately you'll get an idea and you can be able to connect that with the real life, right student? जैसे कि Yes, तुम sir. इंटरव्यू पैनल में ही बैठ जाओगे और ऐसे कोई बोलेगा चलो बुक का डिटेल स्टोर करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? तो सर ऐसा तो कोई टीचर ने मुझे बताया ही नहीं कि बुक का डिटेल स्टोर करना है, तो मुझे तो कोई बोलेगा एरे, कोई बोलेगा वेरिएबल, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई फंक्शन, कोई कुछ भी। अरे फंक्शन कहाँ यूज करते हैं स्ट्रक्चर का? देयर इज अ डिफरेंस, राइट? कुछ भी कहीं नहीं बोलना है। कोई कुछ भी बोलेगा, चलो ऐसे कुछ भी दिखा दिया, हैंड करचिप दिखा दिया, बोले इसका डिटेल स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे बाबा, राइट? इंटरव्यू पैनल बैठे, बोले जो तुम ये कपड़े पहन के आए हो बाबा, इस इसका अगर रेडीमेड कपड़े हैं हमारे, इनका डिटेल स्टोर करना है, तो व्हाट वी रिक्वायर? आप क्या बोलोगे? बोले सर ये क्या है, कपड़े का, कहाँ से बात कर रहा है, ऐसा तो कोई टीचर ने मुझे बताया ही नहीं, राइट? Yes, sir. हाँ यस। बोले जो चेयर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, चेयर का डिटेल स्टोर करना है, तो मुझे क्या चाहिए? बोले सर ये तो आता ही नहीं मुझे, नो टीचर हैज टॉट मी लाइक दिस। So students, be please try to learn everything in a practical life. Only that can help you out. Then you don't have to memorize the thing, because जो हम याद करते हैं वो सब भूल जाता है। मैंने आपको 100 बार बताया कि आपका जो 11th 12th है 10th है सब बाहट वाला था, सब भूल गया है, लेकिन मम्मी ने जो A फॉर एप्पल बताया था, जो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था, वो सब आज भी मुझे याद है, उसको मेमोराइज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट? पड़ता है क्या? क्योंकि वो सब मुझे दिखाया गया था, एक एक ऑब्जेक्ट मेरे सामने लाके दिखाते थे, ये देखो ये एप्पल है, ये बॉल है, ये है, दैट आई रिमेम्बर वेरी वेल। लेकिन अभी कोई दूसरे यहाँ पे दुनिया भर के हमने लॉ पढ़े, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सब बोले अभी कल एग्जाम लेना है सर, टाइम दो पढ़ने के लिए, रिविजन के लिए, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, राइट? सिक्का, Yes, sir. समझ रहे हैं? हाँ सर। यस। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब अगर आप जा रहे हो, तो अगर आपको कोई ऐसे प्रोग्रामिंग, यू मे नॉट बी नोइंग द प्रोग्राम, बट कॉन्सेप्ट कोई पूछेगा तो आप तुरंत बोलोगे यस, ये स्टोर करना है तो क्या चाहिए? बोले फंक्शन चाहिए कि स्ट्रक्चर चाहिए, क्या चाहिए, एरे चाहिए, तुरंत आप बताओगे, राइट? यस। चलो स्टूडेंट्स, आई विल वाइंड अप हियर। वेयर इज माय अटेंडेंस शीट? आज तो अटेंडेंस भी नहीं मिल रहा है बाबा। हाँ, क्या हो गया? ठीक है, चलो देखते हैं। आई, चलो स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, चलो बाय। Thank you.